આજે આખું ફોકસમાં છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સરકાર એક જે સિવિલ એવિએશન છે એના માટે એક સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ બનાવવા જઈ રહી છે. સાથે જ આજે અમુક બ્રોકરેજ રિપોર્ટ પણ આવ્યા છે. તો આ બંને અંગે માહિती લઈએ सहयोगी रोहन सिंह અને यतिन मोटा पास थी. सबसे पहले रोहन आपके पास आना चाहूँगा और ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को लेकर क्या अपडेट आ रही है? जी बिल्कुल, भारत में अभी जो सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है। डिफेंस एयरक्राफ्ट तो फिर भी कुछ कंपनियां बनाती हैं, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट में किसी ग्लोबल कंपनी ने भी अभी तक कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं दिया है। तो अब भारत सरकार, खासतौर पे जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी बनाएगी। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, 5 साल के लिए कंपनी रहेगी और इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके लिए आगे फाइनेंस मिनिस्ट्री में से भेजा गया है। इस कंपनी का काम होगा कि भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाने के लिए जितनी ज़रूरतें हैं वो सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आ सकें। इसमें जो ग्लोबल टैलेंट है उनको लिया जाएगा, चाहे वो बोइंग या एयरबस जैसी कंपनियां हो, उनके से टैलेंट लेने की कोशिश की जाएगी। जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे टैलेंट लेने की कोशिश की जाएगी। जो सैलरी स्ट्रक्चर रखा जाएगा वो ग्लोबल लेवल का रहेगा। साथ ही जो भारत में कंपनियां बना रही हैं HAL, NAL, उनकी भी भागीदारी इसमें रहेगी। और चाहे लैंड एक्विजिशन से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर दी जा सके, इसकी कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक सीड मनी की भी मांग की गई है। फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री का इस पर कमेंट आना बाकी है। एक बार फाइनेंस मिनिस्ट्री का इसमें फीडबैक आ जाता है, उसके बाद इसको आगे जो है आगे के लेवल पे ले जाया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा कदम इसलिए है क्योंकि भारत में अभी सिविलियन एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। HAL ने डॉर्नियर 228 ज़रूर 19 सीटर बनाया है, लेकिन बहुत ही वो लिमिटेड है। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है। ये प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में जब सारे स्टेक होल्डर्स से इनकी बातचीत हो जाएगी तो ये एक फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा। लेकिन एक 5 साल के लिए ये एक कंपनी बनाने का प्लान सरकार ने तैयार किया है। जी रोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़कर ये सारी डिटेल देने के लिए. तो जो આજે ઘણા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ પણ આવ્યા છે ને એના માટે યતિન મોટા જોડાયેલા છે. યતિનજી, સૌથી પહેલાં તો કયા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આજે ડિફેન્સ શેર્સ પર શું કહી રહ્યા છે? તો આજે એક જેપી મોર્ગનની ઇનિશિયેટિંગ કવરેજ રિપોર્ટ આવી છે, જેમાં બે સ્ટોક્સ પર વાત કરી લઈએ, BEL અને HAL, એટલે કે ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ને હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ, જ્યાં ખરીદારીની સલાહ જે છે એ જેપી મોર્ગન આપી રહ્યું છે. BELનો ટાર્ગેટ છે લગભગ 340 રૂપિયા અને HALમાં તેઓ 5135નું ટાર્ગેટ આપી રહ્યા છે. અને જે હિસાબે આપણે ઇન્ડિયામાં ડિફેન્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઉપર અને મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામની અંદર જે કામ કરી રહ્યા છે તેનો ફાયદો આ બે કંપનીને થતા જોવા મળશે. ખાસ કરીને એક્સપોર્ટમાં બી જે સફળતા મળી છે ભારતને, એ એક્સપોર્ટના ધંધા માટે બી આ બંને કંપનીને ફાયદો થતા જોવા મળશે. ઇનફેક્ટ વેલ્યુએશન્સ બી કરેક્શન પછી સારા થઈ ગયા છે. અને BELની સ્પેસિફિકલી વાતો કરીએ તો આ સ્ટોક જેપી મોર્ગનનું પ્રેફર્ડ પિક છે અને તેઓને લાગે છે કે અહીંયા સ્ટ્રક્ચરલ રીતે કંપની જે ગ્રોથ માટે તૈયાર છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ જતાં અહીંયા અર્નિંગ્સ ગ્રોથ હજી બી વધારે એક્રેટિવ બનશે. અને HALમાં બી જે એક્સપોર્ટ માર્કેટ ઓપન અપ થશે ત્યાં બી ફાયદો થશો બંને કંપનીને જોવા મળી શકશે. જી